चेक करो. Yes, I have told you this ना I have factorization, remember, still. है ना? Yeah. But I'm not seeing your assignments. You're not practicing. That means you're not checking assignments which I'm uploading, homework No, I saw assignments. the homeworks, but I didn't have time to do. We can you What? still write this? I saw the assignments, but I did not have time to do it. What do you do in that time? Hmm? What? I'm asking, what do you do? I mean, what is your schedule that you are not getting time for studies, for homework, No, in India, especially like in I don't maths? get time, but when I go back to UAE, I'll have time to do it. Anyways, what should I say? Write this part. Polynomials in terms of its zeros. It's written polynomial in terms of its zeros. Write this formula which I have underlined, I mean, which I have made a box. Yeah. And ठीक है. Take out your NCRT. Check out for question number 2. yeah. Did you read the question? Yeah, wait, I'm opening. Yes. Uh, Question um, number 2, first part. the find देखो a वैसे ये quadratic formula you have polynomials. to learn. This formula which I have written x square minus alpha plus beta यानी कि first zero फिर second zero का add करके we'll be getting the second term, and by multiplying these two zeros we'll get the constant or the third term. ठीक है. ये हमको जो formula है it is based on the relationship between of course zeros and the polynomial. ठीक है. So इसी पे Yeah, based है अपना second question. इस पे अच्छे questions बनते हैं. So read out the second question and write the first part. Okay. yeah.
Done. Both the parts. No, only. क्वेश्चन में क्या क्या दिया है? सबसे पहले वी आर गिवन द सम ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, करेक्ट, कॉमा से Yeah, पहले, राइट, यानी कि 1/4, व्हाट इज 1/4? 1/4 इज द सम ऑफ जीरोस, राइट अब्दुल? yeah, ये नहीं मानना है कि 1/4 अल्फा होगा और -1 बीटा होगा, नहीं, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, दैट इज व्हाई आई सेड एनसीईआरटी का क्वेश्चन पढ़ो, ठीक है? सो yeah, अल्फा प्लस बीटा, basically the sum of zeros is the first one, and second one which is -1, that is alpha into beta, that is the product of zeros, bas. Then jo formula which I have given you, put in that, simple, x square minus sum of zeros जो कि था 1/4 into x plus product of zeros क्या था, -1, that is it, हमने लिख दिया। मैम बट व्हाट इज दिस k? ये तो आपने फॉर्मूला में भी नहीं डाला, why have you yeah, written in the answer, right? है ना, यही क्वेश्चन है। yeah, देखो बच्चे, हम ना एक कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इन द इफ यू हैव नोटिस्ड इन दिस केस वी हैव बीन आस्क्ड द अपोजिट, we have been yeah, asked the opposite. पहले they were giving us the polynomial and then they were asking tell us about the zeros of it, है ना? yeah, Tell me the value of x, tell me the value of alpha and beta, correct? Then we used middle term split method and then we simply found out the two zeros, alpha and beta. Am I correct, Abdul? yeah, But in this question, it is the reverse. We have been given the sum of zeros and the product of zeros, and we have to take out the polynomial. Okay? And to figure yeah, out what is the polynomial, the formula which I have given you, you have to use that and simply put in the values. But in the end, we have to multiply it by a constant k. It can be any constant. Okay? Constant means कोई भी नंबर हो सकता है। लेट्स से इफ आई मल्टीप्लाई दिस इंस्टेड ऑफ k, I write 4, then this whole polynomial will become 4 into x square, that is 4x square, correct? yeah. Then 4 The into 1 by, formula is like formula says x square minus L, sorry, alpha plus beta. Then after you write x, then you have to write plus, right? you have right what? You have to write plus, right? Yeah, okay, okay, But I in got the this, question. Yeah, I got the question. We have to write plus, but ma'am, you have written -1. Why? Because plus minus, question made was plus -1, है ना? minus, ठीक है, तो माइनस लिखा जाएगा, अंडरस्टूड? yeah, बिकॉज प्रोडक्ट क्या दिया आपने को, -1, है ना? तो प्लस -1 would yeah, ultimately be -1 only, understood? Easy, yeah, ठीक है? So yeah, I was talking about the constant. Now let's say if I instead of writing k, let's say मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस पूरे पॉलिनोमियल को अपनी मर्जी से, ठीक है? 4 into x square minus 4 into 1/4, करेक्ट? तो न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऊपर नीचे का 4 से 4 कैंसिल, करेक्ट अब्दुल? yeah, -4 into 1, दैट इज 4, है ना? तो पॉलिनोमियल क्या चेंज हुआ? नहीं, उसे बस हमने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके थोड़ा दूसरा फॉर्म दे दिया, राइट? पर वो है ma'am, you ओरिजिनल have to write पॉलिनोमियल k वही। every time. क्या? You have to write k every time. Yeah, I mean it is preferred, but if you don't write then not an issue, but yeah, it is preferred to write k. No, do Yeah, not take risk, because if your examiner is strict he might deduct marks, zero point 0.5, okay? But okay. yeah, it's not compulsory. Anyways, shall we go ahead with the next one? नेक्स्ट वाले को तो मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ, पता आगे पता चल गया, सम ऑफ Yeah, जीरोस वी राइट इन द मिडल, आगे क्या होता है, हमेशा माइनस होता है सम yeah, ऑफ जीरोस के, एंड द नेक्स्ट वन इज प्लस, राइट? yeah, Write the b part now. But what is the approach? First we have to write the main formula, then we have to put in the values, okay? yeah,
डन अब्दुल रहमान Yes. डन ओके चलो नाउ दिस इज योर प्रीवियस ईयर बोर्ड्स क्वेश्चन सी आई हैव रिटन write this write the question in this case Abdul Okay. Done. all right first write the solution I mean do you want to try this one hmm Um, एक जीरो है अल्फा एक जीरो है टू अपॉन अल्फा ए की वैल्यू जाननी है अल्फा प्लस टू बाय अल्फा कितना होगा फोर होगा है ना क्योंकि दोनों का सम होता है मिडल वाला टर्म है ना बच्चे how? फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी व्हाट इज दिस हम्म व्हाट वाज आई टेलिंग बिफोर Yeah. ये वाला ट्राई करो आफ्टर दैट अपने को पता है आफ्टर मल्टीप्लाइंग दीज टू दैट इज अल्फा इंटू टू बाय अल्फा आई विल बी गेटिंग टू ए करेक्ट है Yeah. ना व्हाई बिकॉज दोनों का सम इज द आई मीन दोनों का प्रोडक्ट इज द कांस्टेंट वाला टर्म है ना तो ए की वैल्यू Yeah. निकालनी है बस ये वाले ए की करो सॉल्व दिस वन सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है पॉलिनोमियल में से देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है उससे देखो एंड इक्वेट करो फास्ट Ma'am, do you write it like k bracket x square minus 4x minus plus 2a? ए ब्रैकेट क्या बच्चे बताओ हम्म Do you write it like k bracket x square minus 4x plus 2a? नो दिस इज द सॉल्यूशन देखो दिस वाज द पॉलिनोमियल गिवन टू मी इसका सम क्या हुआ बीच वाला टर्म इज द सम फोर प्रोडक्ट क्या दिख रहा है Yeah. ये होता है ना टू ए तो आई एम यूजिंग द सेकंड वन Yeah. प्रोडक्ट वाला क्योंकि उसी में ए रखा है ना और ए की वैल्यू निकालनी है डायरेक्ट Yeah. ही
बस ये फॉर्मूला अप्लाई करना आना चाहिए, ठीक है? इनडायरेक्ट क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड. हाँ. हम्म. हेलो. Yeah, ठीक. I'm writing. Why does 2 go in the place of alpha? हम्म. Why does हेलो. 2 go क्या in the बोला? place of alpha? हाँ हाँ. Why does क्या 2 क्या? go in the place of alpha? अल्फा से तो अल्फा कट हो गया ना, तो फिर 2 is getting Yeah, but multiplied why here, does so but if 2 is getting multiplied at this side of is equal to, and when it will go to the other side of is equal to, it will get divided, right? उल्टा हो जाता है, is equal to के दूसरे साइड जाते ही, इसलिए डिवाइड हो गया. और अल्फा तो ऑलरेडी कट गया, तो उसकी कहानी तो यही खत्म हो गई, है ना? अब बस एक ही वैल्यू निकालनी है. yeah? Done. All right, got this one? Understood? Yeah. Next, write the next question. And but you are not revising the basics, you are not revising the notes. That's why you are getting stuck in the calculations. That's why you are not unable to get the approach. No, I'm Okay, revising, but like practice. क्या? the questions some I'm revising what you like taught, but पक्का? the what is called? Yeah, yeah. But the formulas And like what about the the new basics? formulas you say, yeah, the basic also. अच्छा But अच्छा, like the okay. new formulas when you're telling it's Mm-hmm. very hard to apply to the question. Like I don't Yeah, know what you I have to get it, apply. बच्चे. I get it, but you have to be regular, right? You have to daily practice maths at least for an hour. ठीक है? Only then you will be able to understand. Okay, self study is a Yeah, major thing in maths. Okay, that is why it is you are finding it a bit difficult to apply even the direct ones. Okay, yeah. write the next question. Yeah, this one is a bit on a moderate level. This one is not easy. I'll tell you the approach. First, write the question. So now how do you do this one? Okay. First write this, then I'll give you the explanation.
फर्स्ट राइट द सोल्यूशन. ठीक है, मैंने पॉलिनोमियल में से देख लिया which one is alpha beta, I mean the product of zeros, which one is the sum of zeros, right? Middle term is the sum of zeros obviously, and the product is this, right? After that, I have applied for the first identity, the first algebraic identity, which says a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. All right. Yeah. Ma'am, are these three different formulas? Which the formula we are using is this one, whereas these two are the same formulas. ठीक है, algebraic identity ये तुम लिख लो, अंडरलाइन कर लेना, इसमें ये भी बेसिक्स का पार्ट है. ओके. No, like the done. Done. ठीक है, यहाँ तक लिखो. Alpha square plus beta square. Here the answer has entered. Ma'am, can you go through this question once in detail? Yeah, obviously, I said just to write. I'll be explaining this in detail. Okay, okay. Okay. Finish, finish, Hero. Finish writing everything you have written, right? Every calculation. Yes. अब देखो बच्चे, बी केयरफुल. यहाँ तक क्लियर? अल्फा प्लस बीटा माइनस वन कैसे हुआ? How does it become -1? ठीक है, मैं बताती हूँ. सी, alpha and beta are the zeros of 5x square plus 5x plus 1. That means first we have to find out the alpha and beta की value, correct? Yeah. है ना? So can you see Yes. in this question, if we divide the whole by 5, यहाँ मैं रफ कैलकुलेशन भी आप लिख लेना, ठीक है? क्योंकि आपको डायरेक्ट अगर थोड़ा कंफ्यूजिंग लगे तो आप रफ पार्ट भी लिख लेना. मैं यहाँ रफ में कर रही हूँ बच्चे.
इस पूरे को मैं 5 से डिवाइड कर, ठीक है, क्यों, टू सिंप्लीफाई, ऑलराइट। Yeah. तो अगर मैं देखूं, क्योंकि इफ यू नोटिस, देखो कांस्टेंट टर्म कितनी छोटी है एज कंपेयर टू द मिडिल टर्म एंड द फर्स्ट टर्म, राइट, जनरली उल्टा होता है ना, इट Yeah. इज द कांस्टेंट टर्म इज बिगर, इसका तो यही मतलब हुआ, द ओरिजिनल फॉर्म मस्ट बी इन, द ओरिजिनल फॉर्म मस्ट बी इन फ्रैक्शंस, जस्ट लाइक ये वाला था, ये वाला एग्जांपल था, है ना, Yeah. फ्रैक्शन में होगा ऐसे, ठीक है। तो व्हाट एम आई Yeah. डूइंग राइट नाउ, व्हाट एम आई डूइंग राइट नाउ, मैंने पूरे को 5 से डिवाइड किया, तो क्या आएगा 5 से डिवाइड करके, बताओ पूरे को, यस, हेलो, 1. 1x² प्लस, अब 1. नाउ 1. 1. 1 क्या, 1x. या, और आई कैन सिंपली राइट x, एक ही मतलब है दोनों को, प्लस, अब नाउ, 1. अच्छा, देखो ध्यान से, पूरा 1/5 नहीं बच रहा, ये डिवाइड थोड़ी हो रहा है, Yeah. ठीक है। सो नाउ मुझे पता है सम ऑफ जीरोस मिडल टर्म होती है ना, यानी कि Yeah. अल्फा प्लस बीटा मिडल टर्म होगी, मिडल टर्म क्या है अपन, अल्फा इंटू बीटा कांस्टेंट टर्म होती है 1/5, अब पता चला वेयर डिड आई गेट दिस फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स फ्रॉम, ठीक है, Yeah. से डिवाइड करके, अंडरस्टूड, सम ऑफ जीरोस इज ऑलवेज द Yeah. मिडिल टर्म, बट मैम इसमें तो प्लस लिखा है और इधर माइनस लिखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड ये बीच वाला प्लस कैसा आया, मेन फॉर्मूला जो है उसके आगे माइनस होता है, ठीक है बच्चे, बट Yeah. पॉलिनोमियल में प्लस था, कैसे प्लस बना होगा, क्योंकि वो माइनस होगा, ताकि माइनस माइनस मेक्स प्लस, सो इट वुड बी -1, अंडरस्टूड, ये वाला इसका ध्यान रखना है, इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का, इसी में मार्क्स कटता है, ओके, What do you just say? अंडरस्टूड, चलो, सो नाउ व्हाट वी आर गोना डू, अपने को अल्फा की वैल्यू निकालनी है, बीटा की वैल्यू निकालनी है, नहीं, वो तो अगर वो होता तो फिर तो और इजी होता है ना, हम डायरेक्ट फैक्टराइजेशन करना स्टार्ट कर देते, अल्फा की वैल्यू निकाल देते, बीटा की वैल्यू निकाल, वी हैव टू फाइंड आउट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, एंड वी आर गोना फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी, which is a Yeah. plus b whole square is equal to a square plus b square plus 2ab. What you have to do? You have to learn this one. ठीक है, ये आइडेंटिटीज हमें 9th क्लास में लर्न करवाई जाती है, सो दैट वी कैन अप्लाई, Yeah. ठीक है, याद आया, और 9th क्लास में भी पॉलिनोमियल्स चैप्टर में याद करवाई जाती है ना, चलो, एनीवेज, Yeah. अब देखो, इफ यू सी a square plus b square, don't you think they are resembling alpha square plus beta square, है ना, सेम सी तो बात है, Yeah. ठीक है, सो व्हाट एम आई गोना डू, मैं a प्लस बी होल स्क्वायर, ये जो प्लस 2ab है, आई एम गोना टेक इट टू द अदर साइड ऑफ इज इक्वल, ठीक है बच्चे, आई एम गोना टेक इट टू अदर साइड ऑफ इज इक्वल टू, सो इफ इट इज प्लस देन it will get Minus. very good, so it become -2ab, यहाँ तक क्लियर, But ma'am, why will we take it to the other side? Like, how do we know we have to take it to the other side? क्योंकि मुझे सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, जिसकी भी वैल्यू चाहिए होती है ना बच्चे, उसको एक साइड रख लिया करो, बाकी सारी चीजें दूसरी साइड भेज दिया करो, ठीक है, दिस इज व्हाट वी डू, ओके, Yeah. सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब मैं इसे अल्फा के टर्म में लिख देती हूँ, ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 इंटू ए बी अल्फा बीटा, राइट, ए प्लस बी होल स्क्वायर Yeah. अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, इजी। अब मैंने इसमें क्यों लिखा मैम, आपने ऐसे ही क्यों लिखा, वैसे डायरेक्ट कर देते, नहीं, क्योंकि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में लिखूंगी, उनकी वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी, है ना, अल्फा बीटा की भी है मल्टीप्लाई करके, अल्फा प्लस बीटा की भी है, ठीक है,
अब मैं वैल्यू डाल दूंगी Yeah. अल्फा प्लस बीटा की, व्हाट वी कैलकुलेटेड जस्ट नाउ, -1 है ना, माइनस Yeah. माइनस 2 इंटू अल्फा क्या है, अल्फा अल्फा क्या है पता नहीं मैम, बीटा क्या है पता नहीं मैम, लेकिन हमें अल्फा बीटा का प्रोडक्ट पता है, ये दोनों पता है, इन Yeah. दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, दैट इज 1/5 है ना, जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड, ठीक है। सो Yeah. सिंपली आफ्टर दैट वी हैव पुट द वैल्यूज, साइंस के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। और इस साइड क्या, आरएचएस की साइड क्या Yeah. चलता हुआ आ रहा था, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, वो चलता हुआ आ रहा था, तो वो आ गया डायरेक्ट आंसर। ठीक। Um, बताओ। I don't get the step after this. -1 squared minus 2 into 1 by 5 is equals 12. What? What is इसमें after that? इसमें ये तो कैलकुलेशन है, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट है, No, -1 after स्क्वायर that, क्या after होगा, that. -1 स्क्वायर क्या होता है, उसके नीचे का. हाँ 1. एग्जैक्टली तो वही तो सॉल्व किया, -2 इंटू 5 1/5 क्या होगा, 2/5, फिर आई हैव सॉल्व्ड इट, आई हैव टेकन द एलसीएम। फ्रैक्शन सॉल्व करनी आती है अब्दुल रहमान? Cross multiplication. हाँ वही वाला वही वाला, ठीक Yeah. है, अंडरस्टूड। अब Yeah. रिव्यू करो इस क्वेश्चन को, एक एक स्टेप फिर से देखो। Reviewed the question. Yes, Abdul. Yes. Any doubt? No. No, ma'am, for like similar questions like this, you said suppose they gave in the question they gave 5x squared plus 5x plus 1, right? So what if it the same question but with different numbers? Of course, we can do that as well. ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। So like how do चलो, you solve that? Do you still do फिर that like अच्छा मतलब बेसिकली यू वांट मी टू सॉल्व अनदर क्वेश्चन सिमिलर सा, राइट? yeah. ठीक है, वेट करो, मैं और क्वेश्चन निकालती हूँ। इतने फॉर्मूलाज रिवाइज करो जल्दी से, ठीक है। जो भी बॉक्सेस बनवाए मैंने, पहले मैं ओरल सुनूंगी, देन वील सॉल्व योर क्वेश्चंस, ओके। Yeah. रिवाइजिंग पॉलिनोमियल के ही नोट्स देखना है बच्चे अभी, ठीक है। Yeah.
जाएंगे स्टेप्स। Alright, so I'm showing questions. ठीक है बच्चे, देखो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर से अल्फा बीटा कर रहे हैं ये लोग, है ना। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। ओके, Yeah. देखो बच्चे, दिख रहा है। Yes. क्वेश्चन 3 सॉल्व करो। सॉल्व क्वेश्चन 3, डायरेक्ट है बिल्कुल। फर्स्ट राइट द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा करना है अभी, क्वेश्चन 3। राइट क्वेश्चन नंबर 3 इन योर नोट्स, देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। इसी लॉजिक से करना है, अल्फा प्लस बीटा देखना है, पॉलिनोमियल में से अल्फा बीटा देखना है। Ma'am, do you multiply them by 2 to first get the... नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है उसमें, क्योंकि सब में ऐसा नहीं है कि कोई डिवाइड हो रहा है ना। उसमें तो दो ऑलरेडी 5 से डिवाइड हो रहे हैं क्लियरली, है ना। इसमें तो एक भी, तीनों ही अलग नंबर्स हैं, Yeah. राइट। Yeah. सो डायरेक्टली कर लो, इसमें अल्फा बीटा कितना आएगा वो देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा वो देखो। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर नोट्स।
बच्चे हो गया सॉल्व? No, no. ठीक है करो। अप्रोच समझ आ रही है? Wait, I'll do and tell. I'm finished. Do I send you the picture? यस यस बच्चे, खुद किया है ना पक्का अब्दुल? I हम्म? tried. I tried with the help of the old question. You see if it's अच्छा correct. हाँ गुड गुड। हाँ वो अलाउड है। ठीक है मुझे सेंड कर दो। मुझे डिड यू सेंड इट टू द टीम? हेलो? Yeah, I did. यस फोटो भेज दो। Yeah, I sent. ठीक है अब्दुल रहमान, ये आपने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाली है ना? Yeah. है ना बच्चे? Y- बट क्या आप Yeah. क्वेश्चन पढ़ सकते हो और मुझे बता सकते हो किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, करेक्ट है ना? Yeah. Yes. और बेटा अल्फा बीटा इसमें 5 है, वो तो करेक्ट लिखा है। अल्फा प्लस बीटा कितना लिखा है तुमने? -5। अरे अल्फा प्लस बीटा तो मिडल टर्म होती है। मिडल टर्म क्या है इसमें? 7. है ना? तो अल्फा प्लस बीटा में क्या लिखना था हमें? -7। ओके Oh, okay. ठीक है बच्चे, वो करेक्ट करो सबसे पहले। सेकंड लाइन में -7 करो। उसके बाद हमको इधर आइडेंटिटी लगाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा भी है मेरे पास उसकी वैल्यू, और अल्फा बीटा की भी वैल्यू है। प्लस कर दो दोनों को बस। यानी कि 5 प्लस -7, करेक्ट है Yeah. ना? अल्फा प्लस बीटा की। देखा बच्चे, ऐसे सोचना है, ऐसे प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। ओके ये नहीं कि एक ही चीज सब में लग जाएगी। ये पिछली वाली से भी इजी था, क्योंकि इसमें तो हमें आइडेंटिटी भी नहीं लगानी है ना, सॉल्व भी नहीं करना, डायरेक्ट Yeah. दो चीजें बस पता होनी चाहिए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, अल्फा बीटा की। कर सही करो और मुझे सही सोल्यूशन भेजो। So, ma'am, the answer is 2. 2 या -2?
-2 -2. -7। ठीक है, अंडरस्टूड। Yeah. करेक्ट कर लो, मुझे आंसर सेंड करो जल्दी से। एंड ये क्वेश्चन लिखा क्यों नहीं है वैसे, सीधा आंसर क्यों लिखा है तुमने? क्वेश्चन क्यों नहीं लिखा है? अल्फा इंटू अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस। हाँ, लिखने को बोला था। अब जब रिवाइज करोगे तो क्वेश्चन कहाँ से ढूंढोगे? क्वेश्चन भी लिखो, थर्ड वाला भी लिखो, और मुझे करेक्ट करके आंसर भेजो फास्ट। Yeah. Yeah, I sent. सेंड कर दिया। Yes. एंड क्वेश्चन लिखा थर्ड वाला, पूरा क्वेश्चन लिखो। Yes. I wrote. अच्छा, वो भी सेंड किया है ना बच्चे? Yeah, yeah. ठीक है, ठीक है। अब लेट अस राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 डायरेक्ट। ये हमको 3 दे रखा है अल्फा, -4 दे रखा है बीटा। अब हमें पॉलिनोमियल लिखना है। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? जो मैंने आज दिया है, जो बॉक्स में बनवाया था ना, x² माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस। Yeah. ठीक है, इधर अपने को जीरोस दे रखे हैं, तो मिडल टर्म दोनों को ऐड करके आएगी, और कांस्टेंट टर्म दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगी, और फिर एंड में k से मल्टीप्लाई करना। करो क्वेश्चन वन लिखना जरूर है, क्योंकि ये सारे तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आएंगे, इसलिए करवा रही हूँ। ओके। Yeah.